Veteran politician Sharad Pawar to rethink his decision to resign as the NCP chief. His nephew Ajit Pawar says he needs 2 to 3 days to rethink Pawar's rethink move after party leaders protested demanding a withdrawal of his decision. BJP versus Congress, this time over Bajrang Dal in poll-bound Karnataka. The Congress party promises to ban the organisation Bajrang Dal, saying they are spreading hatred and enmity. Prime Minister Narendra Modi hits back, says the Congress party has decided to lock up Bajrang Bali. One of India's leading airlines, Go First, files for insolvency, cancels flights for the 3rd, 4th and 5th of May. Go First says we have no engine supply and 50% of the A320 neo fleet had to be grounded. The aviation regulator issues a show cause notice to the airline for cancelling flights without a warning. Hello and welcome to NDTV 24/7. I'm Priyanshi Sharma. Let's get you the top news stories of the day here. Veteran politician Sharad Pawar is going to rethink his shocking decision of stepping down as the chief of the Nationalist Congress Party. This is according to his nephew Ajit Pawar. Now, the announcement came hours after Sharad Pawar announced his decision to step down, and several NCP workers protested, demanding him to withdraw his decision. His nephew Ajit Pawar, who seemed to be the next in line, another top contender for the next NCP chief, says that Sharad Pawar needs 2 to 3 days to rethink his decision. Seen as one of India's most astute politicians, Sharad Pawar today dropped a bombshell on his party and Indian politics. The occasion was at his book release, where he announced he's stepping down as the NCP chief. इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्यानंतर आणखी विमुक्तच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. हे जरी असलं, The stage quickly was crowded with many senior leaders. There was shock, even tears, and then a series of leaders began speaking out, telling Sharad Pawar that they are staying put until he reversed his decision. पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी. मैंने बल्कि पवार साहब को अभी स्टेज पे जब ये घटना चल रही थी तभी मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने हमसे बात भी नहीं किया, तो बोले मैंने अगर बात किया होता तो आप लोग हाँ बोलते क्या मुझे. This show of strength, endorsement comes in the midst of Pawar family politics and reports that his nephew Ajit Pawar would split and ally with the BJP. Both Ajit Pawar and Sharad Pawar denied this publicly. Today, the nephew and possible political heir supported his uncle's move to step down. The other senior heir is Supriya Sule, Sharad Pawar's daughter, who was present on stage when Pawar announced his resignation. पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय. ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल. But by the evening, Sharad Pawar sent a message through his daughter and nephew that he will rethink his decision in 2 to 3 days. आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा. कार्यकर्ताओं ने उनका मेरा सुनना चाहिए और ये यहाँ से कार्यकर्ता उठ के अपने अपने घर जाए. In the last few weeks, several questions have been raised regarding the future of the NCP. However, Sharad Pawar once again showed that he is the only one who has the control over the party and the party members. What is Pawar's play? Took a different stand from the Congress on the JPC over the Adani issue.
defended PM Modi amid opposition attacks on university degree. Today, quits as NCP chief amid reports of rift within party. Steps down as nephew Ajit Pawar makes political moves. Speculation that Ajit working on Plan B for BJP ahead of the Supreme Court verdict on the Shinde government. Supreme Court to soon rule on 16 Sena MLAs disqualification. Will Ajit-led NCP support BJP in case of Sena MLAs disqualification? But the fallout extends beyond the NCP. Pawar strung together an unimaginable alliance, the ideologically opposed Shiv Sena and Congress with the NCP, and brought it to power in the state till the Shiv Sena split last year. Now, can the MVA alliance survive? Also ahead of next year's elections, what impact will Pawar's latest move have on the opposition unity attempts in which he's been a key leader? Sharad Pawar has asked the party members to give him 2 to 3 days to rethink on his decision. And as per sources, there's a big possibility that a working president will be announced and Sharad Pawar will continue as the president of the NCP. However, the big question is, who will be the future of NCP? Will it be the daughter of Sharad Pawar or the nephew of Sharad Pawar? In Mumbai, with camera person Rajendra Dayalkar, Sohit Mishra, NDTV. And now let's turn our attention to the upcoming Karnataka elections. And now there's a new flashpoint between the Congress party and the BJP ahead of the elections on the 10th of May. This time it's over the Bajrang Dal. The Congress party in its manifesto equated Bajrang Dal with the banned outfit Popular Front of India or PFI. And they said that we are going to ban such organizations for spreading animosity and hatred. The BJP hit out against this. Prime Minister Narendra Modi hit out at the Congress party, saying that earlier the Congress party had a problem with Lord Ram and now they have decided to lock up Bajrang Bali. ಬಜರಂಗದಳವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಮಿಂದಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಅಂತವುಗಳನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದೆ ಯಾರು ಕೋಮುವಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇವು ಮಾಡ್ತೀವಿ आज जब मैं यहाँ हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूँ, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। Prime Minister Narendra Modi leading the attack on the Congress just hours after it released its manifesto. The BJP is seeing it as an appeasement of Muslims, while the Congress claims that Bajrang Dal has a history of creating fear amongst people in the name of Hinduism. Home Minister Amit Shah has banned PFI. Now PFI do not have voice because most of their cadres are inside the jail. Congress is acting like PFI today. We have banned PFI. They said, do not worry, we'll ban Bajrang Dal. The state Congress, which is focusing on local issues and accusing the incumbent BJP government of corruption, dodged the question on equating Bajrang Dal with PFI. Sir, how confident are you to form the government here? 200%, not 100%. But here, sir, you have equated the Bajrang Dal with the PFI. I don't want to comment, let the public comment on that.
While where the Prime Minister also campaigned today, voters asked for jobs, scholarships, better infrastructure and asked the parties to focus on people's welfare schemes than focusing on banning the Bajrang Dal. While BJP's reservation politics is facing a legal battle, the Congress has made a big reservation push that if it is voted to power, it has promised to increase the reservation from 50 to 75% in a hope to accommodate the aspirations of SC, STs, OBCs and other communities such as Lingayats and Vokkaligas. In Kalburgi with Babu Shrija for NDTV. And as the politics is heating up in Karnataka, the Election Commission of India has issued an advisory to all star campaigners, recognized national and state political parties. They say that this advisory has been issued in view of quote-unquote plummeting level of campaign discourse in the ongoing general elections to the Karnataka Legislative Assembly. The Election Commission also says that political parties and candidates are advised to exercise caution and restraint in their utterances to maintain a high standard of discourse, raise issue-based debates, provide pan-India perspective and depth to local discourse. The Election Commission also invited attention to provisions of the Model Code of Conduct and other statutory provisions for strict adherence, and they asked political parties to avoid violating and to avoid vitiating the election atmosphere ahead of the elections. Now moving on, Rajya Sabha Member of Parliament and Aam Aadmi Party leader Raghav Chadha has clarified that he has not been named in the Enforcement Directorate's supplementary charge sheet in the Delhi liquor policy case. Now his clarification came as his name was mentioned in the charge sheet once for attending a meeting, but it wasn't mentioned as an accused or as a witness in this case. Raghav Chadha said that there are no allegations whatsoever against him in the said complaints and that he vehemently denies the commission of any alleged offence. Listen in. मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में सुबह से प्रचार किया जा रहा है न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि न जाने मुझे अभियुक्त के तौर पे, अक्यूज्ड के तौर पर चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरा नाम शामिल कर कोर्ट में दायर किया गया है। यह सरासर गलत है। Now moving on, as it has been close to 10 days of protests against the Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh, he still remains reluctant to quit his post. Remember, the country's top wrestlers are protesting at Delhi's Jantar Mantar, demanding an arrest of the WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh, who's also a BJP MP, raising allegations of sexual assault. My colleague Saurabh Shukla spoke to him about the allegations against him. Listen in. दीपेंद्र हुड्डा का आपने खुल के नाम लिया कि दीपेंद्र हुड्डा पीछे साजिश कर रहे हैं। वो क्यों करेंगे आपके खिलाफ साजिश? ना उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव लड़ना है आकर के, ना उनका कुश्ती संघ से कुछ लेना देना है, फिलहाल ऐसा मान रहे थे। आपको क्यों लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा की आपसे क्या व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई कि वो इतने बड़े एलिगेशंस, और उन्होंने प्रेरित कर दिया इन पहलवानों को जो मेडल ला करके लड़कियां महिलाएं आकर के बोल रहे हैं, कैसे कर लिया दीपेंद्र हुड्डा ने? देखिए, जब पहली बार मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा को बनाया था, तब दीपेंद्र हुड्डा ही हम चुनाव लड़े थे और फिर इन्होंने कोर्ट में जाकर के हमको चुनाव लड़ने से रोका था। और जब ये आ गया कोर्ट का फैसला कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तब मैंने रातों रात दुष्यंत शर्मा को चुनाव लड़ाया और उनको जिताया और इनको हराया। फिर यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से उस चुनाव को रद्द करवाए और फिर तब से मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ और ये हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष अभी तक रहे। और अभी हाल फिलहाल 4-6 महीना पहले उस पद से ये हटे हैं और इनका इंटरेस्ट कुश्ती का भी है और इनका इंटरेस्ट राजनीति का भी है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव आ रहा है और ये इसमें अपना फायदा देख रहे हैं। और उसी प्रकार से इन्होंने एक पिच तैयार की है। मैं शुरू से कह रहा था
कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों का दिमाग है। जो शंका मैंने पहले दिन जाहिर कर दी थी वो शंका आज दिखाई पड़ रही है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? खिलाड़ी क्यों करेंगे? उनको क्या लाभ? वो तो अपना ट्रायल भी मिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी मिस कर रहे हैं, इंजर्ड होने खतरा भी है, रात में मच्छरदानी लगा के सो भी रहे हैं। रात में होटल में सो रहे हैं भैया। संग्रीला में 10 कमरा बुक है, अगल बगल के सारे होटल बुक हैं। ये गलत आरोप मत लगाइए। नहीं, मीडिया तो रहती है, सब रहते, सब देख रहे हैं। मीडिया रहता है। हाँ, रात में ये सोते हैं होटल में। अभी परसों ही कोई गया था। चलिए, सोते होंगे तो हमारी गलती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, FIR दर्ज हो गई, तो भाई क्यों सोते हो सड़क पर? अब क्या आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? क्या आप दिल्ली पुलिस से बड़े हैं? और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब इनकी क्या मदद कर सकता हूँ बताइए। राजनीतिक सवाल पूछता हूँ आपसे। बीजेपी आपके साथ खड़ी है? अभी तक किसी बड़े नेता ने खुल के बयान नहीं दिया आपके समर्थन में। पूरी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारे विपक्षी दल आपके खिलाफ है। आपने खुद कहा प्रियंका गांधी पहुंच गई, हुड्डा जा ही रहे हैं, केजरीवाल जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, आइए देखिए, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये सांसद के ऊपर आरोप नहीं लगा, ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा है। ये ब्रजभूषण सिंह सांसद के ऊपर आरोप नहीं लगा है, ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, FIR दर्ज हो चुकी है। हम भी भरोसा करें, ये भी भरोसा करें, देश भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, ये देश बजरंग पूनिया के हिसाब से नहीं चलेगा, विनेश के हिसाब से नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलेगा और संविधान के हिसाब से चलेगा।